time. You are having a good time. And the children are also having a good time. So while the children are having a wonderful time down, they are playing and they are really able to enjoy themselves, we felt that it would be a good time to really sit for some time and understand this very, very wonderful service, a wonderful duty that we all have got in the form of parenting. Right? I can see parents and I can see grandparents also. Yeah. So somebody who has already, I'm sure you have grandchildren, right? So parenting is something which is so how much of you have actually understood what is parenting? If you can describe parenting in a few words, what would those words be? I think parenting would be bringing up the children with right kind of value system, right kind of habits, teaching them what to do, what not to do. At times, let them learn from the mistakes also. Let them experience in the environment how they can need to adjust and everything. We need to just probably give a right guidance, but at times things doesn't happen the expected way. Especially in our case, the kids are a little cranky. We are really finding it difficult times to handle them, and we are clueless how to make them environment and right values, make them obedient, make them more cool and calm. So that's we are there. Anything else parenting? What? ब्रीफ के आपके शब्दों में आप क्या सोचते हो parenting क्या है? What is parenting all about? आपने कभी बताया. In your own words, what exactly is your lesson of parenting? In between the sentences, please share. And be very open. I mean, you can never be wrong because you are parents. Whatever you say is right. So be honest. What is the parenting? So what do you feel is parenting? Hare Krishna. My name is Rashmi. I am a mother of 2 boys. Wonderful. And 2 boys. Yes. They are aged 17 and 13. I am working children. But I also have been to a point where this is the biggest question in my head. What is my role as a parent? And what is it that I am supposed to do as a good parent? Right? So this is what I have discovered. As my children were within the age of 0 to 5, was my primary duty to create a secure attachment with them. That was the first thing, so that they are able to become resilient as they grow and also be able to attune to their needs instantly when they are at age. And as they grow older, to be able to guide them with behaviors and attitudes and values and principles and values, so that they can grow up to be independent and witty and get what we aspire for them, which is to be leaders, firstly themselves and lead the people around them, and create and make a big difference to the world around them. Yeah? So I think what you said, what I gather is to give them the right values, the right model. So in one sense, in our Vedic word, अच्छे संस्कार देना, है कि नहीं? तो हम लोग को एडमिशन देंगे, जो भी करना है लेकिन अच्छे संस्कार देना वो आपसे ज़्यादा करवाएंगे, gathering that from you, right? To give good morals and good values. Anybody else? We ask yes. So according to me, parenting
parenting is a 20-year-old program or probably a lifelong program where in every stage we have to be little innovative to deal with them. When we are babies, we have to deal with them. Then we always feel, okay, when are they going to grow up little bit at least, yeah, something. And then when they grow up a little bit, okay, then they are going to grow up little more, so that we get our me time. And then when they come to teens, oh God, it's such a difficult stage. When are they going to go through it? Now then we are getting too stressed out and stuff like that. In every stage we have challenges. And also parenting, I have really personally realized that it's a total learning stage for us and a big time reflection where sometimes we don't know who we are, but our children teach us, see you are wrong here, directly or indirectly, and or probably learning from the consequences of their behavior, we learn that where we were wrong. So I have realized that I have made so many mistakes by seeing my kids' behavior. So that is one thing, like kids are our teachers. Right, very good. So what I'm gathering from you is, I like the first statement you made. It's a 20-year or a lifetime program that we, and if you don't realize when the mother gives birth to a child, we don't realize that this is going to be a whole lifetime of responsibility in the program. Very interesting. So this is my wife. She's the one who made me a parent. So we give talk together. So this is Kishori and Shila, that's both of us. So we're just asking them about parenting. So thank you for coming here. I know so many parents are downstairs. Everybody understand English? Good. Yeah. So our beginning of the story. There is a very great saint in Raj, and his name is Ramesh Baba. He's a very elderly great saint. So he was originally from Allahabad and he shifted to Braj when he was 25 years old. He had a calling from the Lord and he gave up everything and he entered Braj to become a sadhu. But he was learning music. So he somehow wanted to pursue that. So he would come to Mathura from Braj, to Mathura is a city, small town, to give his exams. And he would stay in a house where there was a grihastha and they had 4 daughters. So one day early morning, Babaji got up and he was preparing for his exam. And opposite his room was the room of all the girls. The room opened, the first girl got up and she came out. As soon as she saw Babaji, she closed her eyes and went away. The second girl got up, she also did the same thing. The third girl got up, she also did the same thing. The fourth one also did the same thing. So Babaji was very surprised. Why they don't want to see my face? मेरा face क्यों नहीं देखना चाहते? मुझे बिल्कुल चेहरा ढक रहा है. So in the evening he called all the girls when they came back from school. That I saw all of you in the morning, you were covering your faces as soon as you got up and you saw me. So they all replied, our mother has taught us that as soon as we get up, the first thing we should see with our eyes is Radha Krishna, who is in our house, Murti, because by that time the temple is open. So, I said, but instead of that, we were seeing you. So that's how we closed our eyes. After 20 years, Babaji became a very great sadhu. He's a very famous sadhu, you can Google. He's actually considered guru of entire Rajasthan. So in his ashram, one lady came with 2 children. Today I want to meet Babaji. So when she came to meet Babaji, she asked Babaji, Babaji, do you recognize me? You used to come to our house to give exams. She said, oh, how can I forget you? Because you all taught me the greatest lesson of my life. He said, see this. And he removed a locket from his neck which had a picture of Radha and Krishna. Saying, since the day you told me that your mother has taught you like this, I started seeing as soon as I get up the faces of Radha and Krishna. And not only I do that, every pravachan I give, thousands of people, I tell all of them,
and thousands of them are following the same thing. All thanks to your mother. You understand? A great guru is giving thanks to, is grateful to a mother who gave very simple instruction to her kids. Right? So parenting or to raise children, sometimes we see that nobody glorifies. Right? In the corporate world, if you are staying, nobody glorifies, okay, this mother changed so many diapers. And they will say this mother did, maybe this lady, she has got this amount of sales, or this mother did this amount of work, or this lady did this amount of work. But nobody gets awarded for changing diapers or having sleepless nights or that. Same for the father. Nobody gives credit for that. But please remember, this is the most important job. Because what small thing you will teach your children, you do not know how many changes it will make in the world. So parenting is, as our friend shared, it is something that we get pushed into, and then we realize what is it all about, right? Yes, many of you agree that we become parents, and then we start thinking, parenting, heck yeah, and then we have to find innovative ways. Because as the child is growing, as the environment is different, we have to find innovative ways of parenting, because what worked for our parents may not work for us, right? The way we grew will not work the way our children are going to grow, and may work for our parents when they were kids. So I think there's a huge dynamics, there's a huge variables which are constantly involved in this service of parenting, right? So it is a wonderful service, but it is a big question mark in many people's minds. Right? But you can see, does anybody know to whom Srila Prabhupada dedicated his Bhagavad Gita? Prabhupada's Bhagavad Gita is one of the most famous scriptures. To whom did he dedicate his Gita? He dedicated his Gita to his father, Abhay Chandra, to God Almighty. Why? Because the samskaras that he had got in his childhood from his father. So that became a powerful influence in his life. So what a parent does has a powerful influence, good and bad, is his mind. It is not only the good and bad things what the father or the parents do, that is influence the child. It's our child, so I have to be careful, right? We are parenting. So what we will discuss today, my dear friends, is after a lot of research, a lot of discussions, there are different styles of parenting. अलग-अलग प्रकार के parenting की style होती है कि parenting style is a different way parents deal with their children. Right? So we are going to discuss based on those different studies 4 different styles of parenting. Okay, 4 different styles, and we will be discussing which style is the right style. I mean, please don't use. The word style is not a style, but it is basically way you deliver your parenting to your children, right? So I think that's what we are going to be primarily discussing about in this discussion. When you go back, you will be getting an idea where you are, because ultimately what's important is where I am, where I need to be, and how I need to promote that. Most of the time, we don't even know where we are, what we are doing, what is the right thing. Right? So this is what in the next 1 hour, whatever, half an hour, we are going to be achieving that. Yeah, so we will start that. So the factors, if you may need to refer the slides. So the factors in parenting, we are going to be discussing about 2 various factors which will be based on that we will be discussing parenting. One is demandingness. So what it means is to the extent parents control their children's behavior or demand their maturity. So what we are demanding, to what extent? To what extent are parents controlling their children's behavior and expecting a particular behavior? So you understand the word demand, right? Demand. कि मेरे लिए हमारे घर पे यही होगा. This is the way things happen.
to 100 on how a particular parent will express a particular demand. Are you getting my point? So this is one X, if you say X and Y axis. So one axis will be the demanding axis. Okay? And the second axis is responsive. Refers to the degree parents are accepting and sensitive to their children's emotions and developing needs. This is the second thing. One is, this is what I want, right? But the second thing is, what does the child want? What is my child? Because I am made of something, but my child, he or she is my child, he or she may be different, right? Different nature. So what does my child want? So we are going to be, this will be clear from this graph, right? So we are talking about 4 different types of parenting. Okay? We are talking about 4 different types of parenting, and it is basically based on the demanding, which is the y-axis, what is the x-axis, that is the responsive. So we'll first talk about the authoritative, there are 4 types: authoritative, authoritarian, permissive, and neglectful. You can absorb this picture. Right? 4 types. What is first is authoritarian, authoritative, permissive, and neglectful. You will understand what it means. Don't worry, you will understand it. But this is the accession we are talking about. So here comes very interesting. Okay, first, please don't. I didn't have time to really put into bullets and. Please don't start reading this. You will take each point together, right? So first is authoritative parenting, which it means high demandingness and high responsibility. First is authoritative parents have high expectations of achievement and maturity, but they are also warm and responsive. Okay, the parents have a very clear understanding of what is it that they want from the child. Clear है कि हमको ये चाहिए. This is how the way the work should happen at home. This is how he or she should study. This is what he should be doing. So that is very clear. But at the same time, they are very warm and responsive. Please understand the difference. Sometimes you can be demanding and you care less what the other person really wants. Right? That is authoritative. This is authoritarian, but this is authoritative. That means you have clear authority over the subject matter, but you are at the same time very, very open to understanding what the child wants. This is the first quality of this type of parenting. I would just like to ask all of you. Yes. I would just like to ask all of you, what childhood memories you have? Can you think of some childhood memories? Anybody would like to share what childhood memories you have? Yes. So both sort of memories. One is the great fun which we had with the siblings, with the parents, and also the bad experience of the scolding, beating. Both the things. सबसे ज्यादा क्या याद आता है? अगर मैंने आपको बोला हाँ डांट याद आएगा, डांट याद आएगा, ठीक है. Anybody else? And some limit would be there. मतलब हम लोग उसमें लिबर्टी नहीं थी. आपको इतने नहीं रहना है, इतने नहीं करना है, something like that. तो जब मैंने आपको पूछा तो सबसे पहले आपको ये याद आया. ये याद आया मुझे. ओके, बाकी के सब चलो शेयर करो तो. अगर आपको मैंने बोला कि आप याद करो आपके बचपन में क्या हुआ, तो क्या याद आता है? Just be honest. So this is the parenting, by the way. कोई perfect parent नहीं होता है. हम भी जो बोल रहे हैं ना, हम सीख ही रहे हैं, आपसे भी कुछ सीखने वाले. It's always a work in progress. हाँ माता जी. हम जब भी बाहर जाते थे वो डिसिप्लिन से मतलब 7 बजे से घर अंदर आना है, इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है. तो आपको भी वही याद आ रही है, माता जी को वही कंट्रोल याद आ रहा है, इनको भी डांट पहले याद आ रही है. वेरी गुड. और यस माता जी, उनको देखिए. सबसे पहले आपने जब पूछा कि क्या याद आ रहा है, तो मुझे भरोसा, मेरे मम्मी पापा का बहुत भरोसा था मुझे. मतलब मैं कहीं भी ठीक हो तो कभी मुझसे पूछते नहीं थी कि
कहाँ जा रही है किसके साथ, बहुत मजा आता है। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा? मेरी माँ का यही नियम था कि सूरज से पहले उठना है और शाम को सोना नहीं है, कि जब भी सूर्यास्त हो गए तभी सोना नहीं है, खाना पीना नहीं है। तो देखिए सबको क्या याद आ रहा है, डांट याद आ रही है या तो कंट्रोल किया वो याद आ रहा है। आप लोग सबने फन किया है ना अपने पेरेंट्स के साथ, है ना? सबने किया है ना, फिर भी ये क्यों याद आ रहा है जैसे अभी आप करते हैं? तो न्यूरो साइंस के हिसाब से अपना ब्रेन जो है इज ट्यून टू थिंक ऑफ ओनली नेगेटिव मेमोरीज, उनको नेगेटिवली याद रहती है ज्यादा। तो पेरेंटिंग के जो प्रभु जी बता रहे हैं कि ये अथॉरिटेटिव जो पेरेंटिंग है जिसमें डिमांडिंग है, लेकिन वो डिमांडिंग के साथ अगर आपका जैसे माता जी ने बताया भरोसा नहीं है, अगर बहुत कंट्रोल है तो आपको कंट्रोल ही याद रहेगा, आपको भरोसा भूल जाएंगे। तो रिमेंबर ये सीखने की बात है कि अगर मैं आपको याद, अगर आपके बच्चे को कोई पूछेगा when he will be 40 years old कि आपके बचपन की क्या याद है, तो what do you want him or her to remember? ये हमेशा याद रखना। अभी बराबर ना, हम वही याद करें बच्चे को क्या याद रहना चाहिए, that is very important. So आप देखेंगे you will see that what you remember, आप जो आपको चीज याद रहती है वो पेरेंट्स की ऑथोरिटेटिव बिहेवियर ना, ऑथोरिटेटिव था कि ऑथोरिटेरियन था, इज अ डिफरेंस। अगर ऑथोरिटेटिव है दैट मींस देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग यू डू। उसका लॉजिक है कि आप क्यों 7 बजे के पहले आ जाओ घर पे, क्यों? क्योंकि बाहर रहना अच्छा नहीं है, इट इज नॉट सेफ फॉर अ गर्ल टू वॉक outside, or it is not good to eat food after sunrise or sunset, right? So there was a logical reason, एक प्रकार का रीजन था। पर अगर वही ऑथोरिटेरियन हो गया कि करना ही है, क्यों? मैं बोला ना आपसे करने का, मिस करने का, सुना है हमने ना? तो that is not what we can, that is not ideal parenting। हमको क्या लगता है कि पेरेंट्स बीइंग स्ट्रिक्ट, बट एक हम समझते हैं कि एक आप समझिए कि एक प्रकार बैंक बैलेंस है, ओके? उसको कहते हैं इमोशनल बैंक बैलेंस। हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, या इमोशंस की बात कर रहे हैं। ये टॉकिंग अबाउट इमोशनल बैंक बैलेंस। व्हेनेवर वी इंटरेक्ट विद पीपल, हम जब भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो हम ये बैंक अकाउंट खोलते हैं, इमोशनल बैंक बैलेंस का अकाउंट खोलते हैं। तो उसमें हम डिपॉजिट करते हैं, जब भी हम उससे बहुत प्यार से बात करते हैं, कोई अच्छा व्यवहार करते हैं, कोई काइंडनेस दिखाते हैं, when we are very kind to somebody, we are depositing in the bank balance, okay? We are depositing. But कई बार खास करके नजदीक के रिलेशन में, when we are very close to each other, हमको हर टाइम डिपॉजिट नहीं कर सकते, कभी भी विड्रॉ भी करना पड़ता है, कभी भी डांटना भी पड़ता है कि नहीं? यस, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होता है, हाँ, पेरेंट्स के बीच, पेरेंट्स एंड चाइल्ड के बीच में होता है कि चाइल्ड अगर बिहेव नहीं कर रहा, बताया ना कि चाइल्ड बिहेव नहीं कर रहा है, तो अगर उसको बोलते कि अरे अच्छा बच्चा है तो नहीं सुधर रहा, आपको डांटना पड़ेगा। सो व्हाट इट मींस, यू हैव टू विथड्रॉ। डांटना जो है इज लाइक विथड्रॉइंग फ्रॉम द इमोशनल बैंक बैलेंस। पर अगर बैंक में जमा कर आपने डिपॉजिटेड, but you don't have enough money and you start withdrawing more than what you have, what will happen? What will happen? क्या होगा? चेक बाउंस हो जाएगा ना, कि पैसा insufficient fund, you can't withdraw, yes? बहुत बार यही होता है, आप याद रखिए। अगर हमको ऑथोरिटी चाहिए बच्चे के ऊपर, और ऑथोरिटी जरूरी भी है, क्योंकि उसको अगर मोल्ड करना है, you want to mold him or her to be a nice person, you need authority. But with the authority, if you are not putting emotional bank balance, if you are not giving them love, if you are not giving them care, if you are not giving them reason why you do what you do, अगर हमको समझाएंगे नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि मैं बोला ना करने का, करने कितने लोग ऐसा करते हैं, आप कम मत करिए, पूछिए अपने आप को। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर सबको आदत है, प्रभु जी इसको भी, माता जी को, बच्चों को भी, नहाने के बाद गीला तौलिया बेड पे,
डालते हैं ना, और चिल्लाती है, मम्मी चिल्लाएगा अरे सुखा के जाओ, हस्बैंड में बोलेंगे सुखा के जाओ, नहीं सुखाते। लेकिन कभी आपने उनको एक्सप्लेन किया कि गीला तौलिया जो है उसके ऊपर अगर वो गीला ही रहेगा, आप सुखाएंगे नहीं तो उसमें फंगस हो जाएगा। वो फंगस से जब आपके बॉडी को आप पोछोगे तो वो फंगस आपके शरीर पे लगेगा, और आपके शरीर पे लगेगा तो क्या होगा, आपको इन्फेक्शन होगा। हम बहुत बार अज्यूम करते हैं, सोचते हैं कि सामने वाले को पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि उनको नहीं पता होता है। आपके हस्बैंड को भी नहीं, आपके इन-लॉज को बोल के बताना बहुत ही जरूरी है। अगर आप वही चीज समझाएंगे ना तो वो व्यक्ति ध्यान से करेगा, क्योंकि उसने भी इंटेलिजेंस तो दिया है, आपका ही बच्चा है, आपका ही बेटी या बेटा है, समझता है, लेकिन आपको वो बताना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा जो प्रभु जी ने बताया इमोशनल बैंक बैलेंस, इमोशनल बैंक बैलेंस में डिपॉजिट करना जरूरी है। तो क्या डिपॉजिट करना जरूरी है, बर्थडे पे ये गिफ्ट दिया, 3 गिफ्ट दिया, 4 गिफ्ट दिया, यहाँ पे पार्टी के लिए लेके गए, यहाँ पे उसको घुमाने के लिए लेके गए, ये सब इम्पोर्टेंट है क्या, ये सब इमोशनल बैंक बैलेंस है क्या, इम्पोर्टेंट है? ओके, टाइम, टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप आपके माँ बाप से क्लोज थे, सपोज 25 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई, 25 साल आप आपके माँ बाप के साथ रहे हैं, इसके लिए आप क्लोज हैं। और जब विवाह हो जाता है तो एक ही दिन में हस्बैंड और वाइफ के साथ वो इतना क्लोज रिलेशनशिप हो जाता है, लेकिन उसे भी टाइम देना पड़ता है, नहीं तो वो क्लोज नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से पेरेंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट ये जो प्रभु जी बोल रहे हैं कि इमोशनल बैंक बैलेंस में क्या है, आपका समय। और अभी ये कलयुग में हमारा समय, हमारा मोबाइल बहुत ज्यादा ले रहा है, हमें समझे कि ना समझे। अभी भी मैंने नीचे देखा कितने सारे माँ बाप कुछ और कर रहे, बच्चे मोबाइल में खेल रहे। अरे यहाँ तो छोड़ो मोबाइल, इतने सारे गेम्स हैं, इतने सारे स्टॉल्स हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, चिल्ड्रन डोंट नीड एनीथिंग एल्स, दे नीड यू। तो यू हैव टू फिगर आउट, चाहे आप उसे बड़ा गिफ्ट दो, छोटा गिफ्ट दो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज योर टाइम। तो आप जब आपका टाइम टेबल बनाते हो, सुबह उठते ही हमारा टाइम हो जाता है ना, आज जॉब पे जाना है, ये करना है, वो करना है, उसने कभी डाला है बच्चे के लिए टाइम? प्लीज डालिए, क्योंकि वही आपका इमोशनल टाइम बैलेंस है। जितना आप अभी उसमें इन्वेस्ट करोगे, टाइम इन्वेस्टमेंट की बात है, रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट की बात है। So authoritative parenting is basically having some authority with proper reasoning. As you can read here, these parents provide their kids with reasoning and explanation of their actions. So when the child grows, he will not see, वो बताएगा नहीं कि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, पर मेरे पेरेंट्स बहुत ही क्लियर कट थे कि क्या चाहिए और पूरा रीजनिंग के साथ। Basically, kids become what they see in the parent. Kids are like sponges. So kids are like sponges. And there's a beautiful video that we want to show you about kids are like sponges. I'm sorry, this is not what we need to see. Children are like sponges. Your child.
This mother is doing her work and at the same time giving comfort to you. Innovative way. Maybe your child press story line. For more information, call 188 first. Children do what they see. So who's more important? What is more important? What we do. So not only do we need to have emotional balance with the child, ऐसा नहीं है कि हम केवल बच्चों के साथ इमोशनल बैलेंस की बात करेंगे, बट हस्बैंड एंड वाइफ, माता और पिता का खुद का रिलेशन भी बहुत ही जरूरी है. अगर बच्चा वो नहीं देखता है, if he doesn't see a cordial, loving relationship between husband and wife, if the husband is not behaving properly with the wife and vice versa, you can give whatever toys, you can give whatever games, you can do everything for the child. He is not going to grow up to be a responsible adult, guaranteed. Okay? So please, parenting is a big responsibility. You didn't want it, you should have thought it long back, but now that you are a parent, there is no way out. अगर हमको समझता नहीं है तो हम सीखना चाहिए, but it is a responsibility because you are actually nurturing a soul in this world to be a good or a bad person, and his presence or her presence is going to affect many people around. You are going to be one of the main causes of that. आप समझ रहे हो? So please, parenting is a holistic thing. HOL and WHO both. Holistic means सर्वांगीण, everything inclusive, and holistic means you have to have the holiness in your relationships. There should be sacredness in your relationships. So again, coming to this point, so authoritative parenting. Next, authoritative parents are affectionate and supportive. They provide their children with autonomy and encourage independence. Very important. When a child is small, you must control, but as the child grows, I remember one of the examples given to me. I said you should do parenting like a kite. पतंग कितने लोग ने पतंग चगाई है? पतंग हम चगाते हैं पतंग. तो sometimes हम कहते हैं ढील देना. तो पतंग लगता है कि ढील में वो पतंग ऐसा था. But you have the rope, you have the thread with you. Moment you pull it little, it will again come up. Yes, for those who have flown kites will understand this. Similarly, you must give the liberty to the child. Let him or her grow. Because if the liberty is not given, if the child is not understanding, and as I said, things told to you against your will, you are of the same opinion still. In English, बहुत बढ़िया phrase है. Things, अगर कोई चीज़ आप बता, if things told against your will, you are of the same opinion still. अभी हिंदी में इसको मैं नहीं बता पाऊंगा, पर आप समझ रहे हो ना कि अगर हमारे इच्छा के विरुद्ध हमको कुछ कहता है, हम उसको सुनते हैं,
पर उसको हम चेंज नहीं कर पाते हमारे बिहेवियर। तो हम बच्चों को बहुत डांटते हैं, ये कर तू, वो करेगा भी, एक दो बार करेगा, पर उसका बेसिक बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। आप समझ लो? यस। ओके, एवरीथिंग। व्हाट यू वांट टू से? एक्चुअली एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जो एक्चुअली मैं अपने बच्चे को सिखाना चाहती हूँ कि आप अगर कोई भी चीज़ लेते हो अपनी जगह से, वो अपनी प्लेट पे रखो। ये मैं 2 साल से सिखा रही हूँ। You are not doing, still I am doing in my home. मैं जहाँ से उठाती हूँ और वही रखती हूँ अपना सामान, और मैं उसको एग्जाम्पल भी देती हूँ कि now I am cleaning here. तो हमें अपना घर क्लीन रखना है। बट ये बेसिक चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो अपने कलर्स उठा रहे हैं, तो कलर्स को भी क्यों नहीं रख रहे हैं? एक 7 ईयर्स से 5 ईयर्स की बेटी है, पर वो सब डूइंग लाइक उठाया किया एंड चले गए, उठाया किया एंड चले गए। और आई एम फिर मैं जब फेडअप हो जाती हूँ उसको, मैं कहती हूँ घर गंदा लग रहा है, आपको उठाना चाहिए, आपको चीज़ मिल जाएगी लेकिन जल्दी चाहिए। मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ, रियल टाइम बताती नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, हम बहुत अपसेट हो जाते हैं। आप चिल्लाते होंगे, पहली दिन तो आपने बोल दिया, एक दिन प्यार से बोलते हैं, दूसरे दिन प्यार से बोलेंगे, जैसे एक बार बोलेंगे अरे उठा लो, नहीं सुनते, दूसरी बार बोले उठा लो, नहीं सुनते, तीसरी बार और गुस्सा आता है। उसमें क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर ही बढ़ रहा है लेकिन मूड भी चेंज हो रहा है। तो उसका मतलब आपको वो आज सीखनी पड़ेगी कि जिससे जो आप बोले वो अच्छी तरह से सुन सकते हैं। और वो कब होता है, जब आप उनके साथ अच्छा कनेक्शन बनाएंगे। पेरेंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कनेक्शन, और वो कनेक्शन सबसे अच्छी तरह से होता है पहले जब हम उनको सुनते हैं। हम फोन करते हैं ना, फोन लग भी जाता है, मैं उनको ही फोन करने ऊपर था और मेरे माइक को नीचे फोन लगाया, वो मुझे देख सकती है पर फोन पे आवाज नहीं आ रहा है। क्यों? हेलो हेलो हेलो, वो भी हेलो हेलो हेलो, पर कनेक्शन नहीं है ना। तो एक आप जो बोल रहे हो ना, वो सभी रिलेशनशिप में होता है। आप हेलो हेलो कर रही है, वो भी हेलो हेलो कर रहा है, पर कनेक्शन नहीं है, तो कैसे? So you have to speak. So there's a technique, there's a way. So there's a way. The way you should speak to the children listen, and the way the children should speak that the parents listen. It's a whole seminar by itself. But yeah. एक छोटी सी टिप दे सकती हूँ कि हमको, जैसे आपके बच्चे छोटे हैं तो यू हैव टू कम अप विद इनोवेटिव वेज। या तो फिर घर पे मैंने जब ये लोग दोनों, मैंने तो हस्बैंड और डॉटर से तो मैं कुछ चीज ना लगा के रख देती थी कि सपोज वॉश बेसिन के ऊपर कि ये सीट पे बाल नहीं होना चाहिए क्योंकि चिल्ला चिल्ला के हम भी थक जाते हैं ना, और हम चिल्लाते हैं, जैसे ही हम चिल्लाना शुरू करते हैं उनके दिमाग में क्या होता है, चालू हो गई, एक चालू हो गया, हाँ स्विच ऑफ हो जाते हैं, बोलो स्विच ऑफ हो जाते हैं, फिर आप कितना भी बोलो उनके अंदर जाता ही नहीं। हाँ देखो अभी आपकी बाजी में बैठ के बोल रहे हैं, ऐसा होता है। इसके लिए क्या तो फिर कुछ लिख के बताइए, तो आप सिर्फ लिख के देख सकते, तो आपको भी आपका एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। दूसरा 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 कहीं पे जैसे आप आपके रूम में रख सकते हैं, जो बच्चे रूम में हैं, कि कलर्स जहाँ पे कलर्स हैं, अगर दे कम बैक टू दिस बॉक्स, अगर कुछ कार्टून ड्रॉ कीजिए कि कुछ ऐसा कीजिए, और नहीं तो ना आप बोलने के बदले एक कुछ एरोप्लेन बना देना पेपर का, एरोप्लेन देखिए उनको और वो उसमें लिखो इट्स टाइम टू पुट योर थिंग्स बैक। चिल्ड्रन लाइक क्रिएटिव थिंग्स, दे लाइक क्रिएटिव, तो आप शाउट करके, हमको एक ही आती है, बोल के बताना, बोल के बताना। See, अब आजकल के जो बच्चे हैं ना, they want more creativity. They are very, because they are retention, they are basically capacity to learn is constantly changing because they are very much exposed. आप समझ लो बहुत ज़्यादा ही exposure है बच्चों पे, तो उनको एक चीज we have to find in various ways. तो आजकल हम लोग कभी सीखा ABCD सिंपल सीखा था, एक और एप्पल सीख लिया हम लोग ने, तो अभी कितना अलग अलग स्टाइल आता है, फोनिक्स और ये और वो, भाई सेम थिंग्स वही सिखाने के लिए, राइट? So the children are basically, as somebody said,
that we have to, I think you said, we have to be innovative in our parenting. Parenting is a constantly way to improvise, and that's why we have to discuss with different parents, attend such discussions groups where you learn, okay, if this doesn't work, अगर मेरे बोल से नहीं हो रहा है, so maybe there's some idea, I can write it, I can do something innovative. The child will listen. For sure. But we have to find innovative ways. I think questions later, please, so that we can finish this. If you don't mind, we can quickly go through this. So basically, what we want to share is that what is the result of a child when the parents are authoritative? This is what we want. By the way, this first way is the research world over in various countries. This is considered to be the best type of parenting. Authoritative parenting. The child happy, independent, active, high on academics, good self-esteem, interacts with peers, free of anxiety, exhibits less violent tendencies, very secure and attached. Right? So we are not talking about liberal parenting. Sometimes people feel कि liberal छोड़ दिया ना सबको बच्चों को push ज़रा force मत करो. But that's not what parenting is all about. Authoritative parenting versus authoritarian, that is the wrong thing. This one. This is not the right type of parenting, and you will see what is happening. High level of parenting control, low levels of responsiveness are two characteristics of authoritarian parenting. Authoritarian parenting is similar to authoritative, but you are not bothered about other people's responses. You understand the difference? आप समझ रहे हो? उसमें you are concerned कि सामने का व्यक्ति कैसे behave कर रहा है, and you are very cognizant. You are very cognizant. You are very much aware, very much mindful of other person's feelings. But in authoritative, this is the way it should happen. No explanations given. Why? Because I am the boss. I am the father or I am the mother. Authoritative. एक बहुत बार होता है कभी-कभी हम बोलते जाते हैं लेकिन उनको न तो समझाते हैं न तो उनकी फीलिंग्स को हम समझ सकते हैं. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. विद दिस एंडिंग 5-10 मिनट्स होंगे, मुझे लगता है आप सबके लिए बहुत कुछ और भी है. तो जब कभी-कभी हम बच्चों को, जैसे बच्चा हम कहीं पे जाते हैं ठंडी की सीजन में, हम बोलते हैं स्वेटर पहन लो. बच्चा बोलेगा मुझे नहीं पहनना है. आप बोलेंगे नहीं पहनो, ठंडी है, इतनी ठंडी आपको समझ में नहीं आ रहा, पहनो. बच्चा बोलेगा नहीं पहनेंगे. ऐसा एक चीज होगा. तो फिर क्या होता है, हम सोचते हैं कि बच्चे को ठंडी लग रही है इसलिए इसको पहनना चाहिए, लेकिन बच्चे को एक्चुअली शायद ठंडी नहीं भी लग रही है. उसका शरीर का जो तापमान है शायद अलग है. कई बार हम आपका बच्चा किसी पार्टी में गए, पार्टी में जाकर आया तो बोले कैसी पार्टी लगी, बर्थडे पार्टी, कुछ मजा नहीं आया, उधर खाना भी अच्छा नहीं था. ये अरे तुमको समझता नहीं, उसके पेरेंट्स ने कितना मेहनत किया होगा, तुम कितना बोल रहे थे. तो जब हम सामने ऐसे क्वेश्चन करने लगते हैं या तो बच्चा जो बोल रहा है उसको सुन नहीं रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इससे दो चीज हो रही है. हम बच्चे के मन में डाल रहे हैं कि तुमको जो फीलिंग हो रही है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो राइट है. समझ में आया? जब आप बच्चे को बोल रहे तुमको स्वेटर पहनना ही पड़ेगा, अब बच्चा बोल रहा है मुझे नहीं पहनना है, क्योंकि आप उसे पहना होगे तो क्या होगा. जैसे एग्जाम्पल ऑफ ऑटोटेरियन, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. आप समझ नहीं रहे हो कि बच्चे की नीड क्या है, जरूरत क्या है. शायद बच्चे को वो बर्थडे पार्टी अच्छी नहीं लगी, सुनो ना उसकी बात. अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बच्चा बहुत सारी चीजें बताएगा. इसलिए एक एग्जाम्पल देती हूँ. मैं एक लड़की को जानती थी, वो लड़की का स्कूल में किसी बच्चे ने उसको मारा था. तो पेरेंट को स्कूल से फोन आया काउंसलर का कि आपके बच्चे को आज बहुत मारा है, तो हम बहुत सॉरी हैं, लेकिन हम दूसरे बच्चे के लिए ध्यान रख रहे हैं कि उसको क्या करना है. फिर ये बच्चा जब घर आया तो उसकी माँ को पता था कि आज मेरे बच्ची को बहुत मारा है किसी ने, लेकिन बच्चे ने कुछ नहीं बोला. ओके, तो अभी मदर ने ये पेरेंटिंग टेक्निक यूज की कि मैं भी उसे तब तक नहीं पूछूंगी जब तक वो मुझे नहीं बताएगी. मुझे तो पता था, नहीं तो दूसरी माँ अभी तो क्या किया तुझे, इसने मारा, ऐसा बोल के कुछ नहीं होता. ऐसा नॉर्मल रिस्पॉन्स हमारा. तो ये मदर ने सोचा नहीं मैं नहीं पूछूंगी. तो फिर धीरे धीरे सब बच्चे आई, पर वो सैड थी, उदास थी.
तो बच्चे ने माँ ने पूछा कि आप क्यों उदास हो, स्कूल में कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर बोले मुझे मम्मी पेट पे दर्द हो रहा है। क्यों? नहीं, मुझे कुछ लग गया। तो फिर मम्मी उसको संभाल रही थी। धीरे धीरे जैसे वो उसकी बातें सुन रही थी उसके फेस से फिर वो बताने लगी कि आज ना ऐसा एक्चुअली स्कूल में एक लड़के ने मुझे बहुत मारा। फिर क्या हुआ, क्यों मारा? तो मम्मी एक्चुअली ना वो लड़का बहुत गुस्से वाला है, उसको समझ में नहीं आता है, वो आके किसी को भी मारपीट कर देता है। तो उसे गुस्सा मुझ पर नहीं आया था, मेरे बाजू वाले लड़के पे आया था, लेकिन वो ऐसे गुस्से में आया तो उसने मुझे बहुत मारा। उसने मुझे भी मारा, बाजू वाले को नहीं मारा, लेकिन मुझे बहुत मारा। फिर मम्मी ने उसको पूछा कि तुमने क्यों नहीं बताया? तो उस बच्चे ने बताया कि अगर मैं आपको बता देती थी तो आप हमेशा के लिए वो बच्चे के लिए गलत फहमी रखते थे। मम्मी वो बच्चा इतना खराब नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, तो अभी देखो क्या हुआ, इसमें बहुत बड़ी लर्निंग सीखे। वो बच्चे ने बताया ही अपनी माँ को कैसा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका थिंकिंग एक्चुअली बहुत महान है। उसने वो लड़के को गलत नहीं सोचा, उसने बोला नहीं उसका कुछ प्रॉब्लम है क्या जिसके लिए उसने मारा। वो फ्रेंड है, उसने उसके बारे में इतना दिमाग में नहीं रखा। अगर हम बोलते रहते क्यों मारा उसे, वो बच्चा ऐसा है खराब है, तो क्या होगा, परमानेंटली हम उस बच्चे के बारे में उसके दिमाग में डाल देंगे। तो इसीलिए कनेक्शन का होगा, ये माँ और बेटे का कनेक्शन था। इसीलिए बच्चे ने धीरे धीरे सारी चीजें बताई। और दूसरा एडवांटेज क्या हुआ, वो बच्चे ने अपने आप, क्योंकि उसका कनेक्शन माँ बाप के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे दुनिया में कोई कुछ करता है ना, फर्क नहीं पड़ा। समझिए, क्योंकि बच्चे के लिए माँ बाप भगवान है। हमारे लिए भगवान कृष्ण है, लेकिन बच्चे के लिए माँ बाप भगवान है। तो वो माँ बाप के साथ जो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, दुनिया की कोई भी चीज कोई भी कुछ कर जाए उसे नहीं फर्क पड़ेगा। इसीलिए ये कनेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। और ये तभी होगा जब आप टाइम स्पेंड करेंगे, आप बच्चों को सुनना सीखेंगे। हमेशा नहीं तो हमारे पास प्यार होता है, जैसे बच्चे ने कुछ बोला, स्कूल से आके बोला मुझे मारा, तूने कुछ गलती किया होगा, तूने ये नहीं किया होगा, तूने वो नहीं किया होगा। तो इमीडिएटली वी स्टार्ट सेइंग सो मेनी थिंग्स। उससे अच्छा है बच्चे को सुनने की कोशिश कीजिए, वो क्या बताना चाहते हैं, बच्चे सब आपको बताएंगे, सिर्फ उनको थोड़ा शांति से समझ लीजिए। So authoritative parenting is basically हम बता रहे हैं कि भी authority without any understanding। तो उसका रिजल्ट क्या है? देखो, अगर आपको बच्चे को ऐसा करना है ना, तो you be authoritative। The children are unhappy, less independent, insecure, lower self-esteem, behavioral problems and many things। हाँ, देखिए आप इतना फर्क पड़ता है क्योंकि उनको प्रेम नहीं दिया है आप लोगों ने। You are not giving them any emotional positivity, you are simply demanding। समझ रहे हो? You are simply demanding। So this is not parenting। So now ये करने का पर्पस क्या है? To see where you are। You may not be completely in one side। Okay, I'll just quickly, I think it's getting time, so we'll go to the next thing. There is permissive parenting, where basically people are having very few rules and they are very wrong, very few rules। फिर तेरे को जो करना है कर, no problem। rules है, but we will change the rules for based on you। So that the parents don't, they want to be popular parents। They want to feel that my child should feel that I am a nice parent, but there are no rules, right? And the last one is neglectful parenting। That means either one or both the parents are not bothered about the child। जो करना है करने दो, I don't care। बच्चे को हम छोड़ दिया, मैंने टाइम पूछते थे आपके बच्चा कौन से क्लास में है, शुरू मुझे पूछते दो। हाँ, तो इस तरह से हम सो मच अलूफ है बच्चों के लाइफ से, तो बच्चा भी आपको अलूफ रहेगा अपनी लाइफ से। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। तो ये 4 प्रकार के पेरेंटिंग है ना, उसमें से द राइट पेरेंटिंग एटीट्यूड इज द ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। हम फर्स्ट बात की डिटेल में बात की, जहाँ रूल्स है, रेगुलेशंस है, डिसिप्लिन है,
clear. You can use the rod. Spare the rod and spoil the child. मतलब यशोदा ने भी रॉड निकाला था कृष्ण भगवान को दाऊद लीला में, पर यूज नहीं किया था. उसका मतलब क्या है? रॉड का मतलब है डिसिप्लिन होना चाहिए. अगर डिसिप्लिन नहीं होगा ना तो बच्चा बिगड़ जाएगा. But with the discipline, having proper balance of love and care and having the right reasoning for the child. That's already parenting. I want to end with 5 things which we call smart parenting. We all want to be smart parents, right? Smart. So what does smart parenting mean? Kishori and we will explain this. Okay, quickly. So S stands for service and no proprietorship. ये जो है ना ये इधर भी बच्चे हमारे is our property. They are not our property. ये जो बच्चे अभी whatever I want to do. Somebody sometimes the parent is beating the child and then somebody else said कि बच्चों को इतना मारो मत. फिर वो क्या है? मैं जो भी करूँ मेरा बच्चा है. Of course, but to parenting first thing is it's a service. It's a sacred service because the child needs the parents as the child is growing to make the child ready for the world, to make him a positive support to the world. It's a service, it is not proprietorship. You are not owning the child is the second property of Krishna, of God. So basically 2 things. We are not owners, but we are trustees. Trustee और owner में आपको फर्क पता है ना? Trustee है means ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे ट्रस्ट में डाली गई है, तो उसको मैं वो से तो उतना ज्यादा संभाल क्योंकि तो मेरी नहीं है ये. आप समझ रहे हो ना? अगर आप दूसरे फ्रेंड की गाड़ी लेके आते हो ना तो आप ज्यादा केयरफुल रहते हो ना, क्योंकि फ्रेंड की गाड़ी मेरी गाड़ी नहीं, मेरी गाड़ी डूब गई तो भागना नहीं, मेरे पर जाना होगा. दूसरे की गाड़ी में एंड बी वेरी केयरफुल. सिमिलरली children are not your property. You are not owners, you are trustees. याद रखिए, first thing, you are not owners, you are trustees. Second thing is M stands for Mahachalo Yena Kathas. M means to give role models to the child. बच्चों को अनुकरण और अनुसरण करने के लिए कोई रोल मॉडल देना चाहिए. ये तो वो अपना खुद के रॉन्ग रोल मॉडल से करेंगे. What is the role model? आपको ध्रुव प्रहलाद वो है, but currently क्या रोल मॉडल्स है? To really make them grow based on role models. There are nice people in the world. Otherwise, they will find crazy people and they make them role models. And similarly, parents should also have role models. आप रोल मॉडल सबको जरूरत होती है. आप नहीं दोगे तो खुद बनाएंगे, और खुद बनाएंगे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाओगे. तो बच्चों पर आपके एक रोल मॉडल अच्छे होने चाहिए, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि आपके ये रोल मॉडल है. Who's anybody role model? Who's your role model for parenting? Anybody want to share? Quickly. Any role models you have for parenting, not for anything else. Parenting role models. है कि नहीं है? So please have one. Please have. There are great parents like who? Jijabai, great parent. Sudha Murthy, great parent. So these are the role models. So अगर हमारे खुद की रोल मॉडल नहीं है तो हम बच्चों का क्या सिखाएंगे? है कि नहीं? So next time होमवर्क आप सबके लिए रात को सोने के पहले find your role models in life first. Yes? Thank you. Second, the third thing is A stands for affection, as we already discussed. We give a lot of affection to the child, right? The fourth means responsibility. As I said, parenting is a great responsibility for the rest of our life. To really make a child a wonderful, as we said that that person. I heard the story. There was a person who was going to be hanged. He said, "What is your last wish?" And I want to meet my mother. Yeah, he was a big criminal. So he met his mother, and the first thing he slapped the mother. I said, "What sort of cruel guy you are?" I said, "No, because if she would have stopped me from the first stealing that I did, first pickpocket that I did, I would have not been like this." Of course, the story has different ways to look at it, but the point is, it is the responsibility of the parent to really teach the right thing at the right, and many times to do the right thing at the right time. Please, this is very important.
Many times the parents don't spend time with the child when the child is very young. And then they see the child is going out of my hands. And then say, I want to spend time. But the child doesn't need you anymore. The child is already grown up. Are you getting this? So parenting means doing the right thing at the right time. Very important. And the last thing, my dear friends, very important, is giving the right training to the children. Parenting doesn't mean just giving gifts and giving costly gifts and giving comfort and luxury. That you can give based on your financial situation. But that's not parenting. Parenting means to give the right training. And in चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए. सीताराम 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 चाहिए. That is training. कि जो भी situation में मेरा बच्चा रह सकता है. That training you should give. If it is luxury, the child is happy in luxury. But if there is difficulty, my child will be happy to stay in that situation. That is training. That is parenting. Okay? Many parents are very proud. I take my child, he goes to a IB school, he goes by air conditioned car. That's good. Give all comfort, no nothing wrong. But tomorrow, when there is no electricity in Bombay, when there is a power shortage, can the child live? But train the child. I remember, she was, my daughter went to she's staying for the studies. So in that house where we have rented, there is an Indian bathroom. Okay, in our house we have a Western bathroom. So then one bathroom has a Western bathroom and one is Indian. So I always had the father saying, you use the Western one, use this bathroom. But she as a mother said, no, you use the Indian one. And I remember you telling, you learn how to use Indian also sometimes. I like that. I didn't tell her, but I like that because the child should use small things, but everything. So that's training. So that is smart parenting, my dear friends. I hope you had a good time today. I hope you already are smart. You can further become more smarter in your parenting. Of course, the most important thing by keeping Krishna in the center. But we take this one thing. By being a good devotee does not make you a good parent. Please everyone understand that. By you being a good devotee does not make you a good parent. You have to be a good parent separately. Thank you very much. Learn to be good parent. Hare Krishna. Okay, thank you very much, and please go down and enjoy. There is a prasad for you.